बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद रखिए, जिस तरह कि हमें मालूम है कि हमारे पास जितनी भी डायनामिकल वेरिएबल है क्लासिकल में, लाइक मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसके लिए ये वाला टर्म यूज़ होता है और इसको हम बोलते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। Similarly for Py, Pg and total linear momentum P in classical mechanics is replaced by momentum operator P cap equal to minus iota h cut del operator. Similarly, the total energy in classical mechanics E is replaced by E cap equal to iota h cut partial by partial t. And the kinetic energy in classical mechanics is replaced by in quantum mechanics by T cap equal to minus h cut square by 2m into del square. इस तरह हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं एल एक्स, एल वाई और एल जी, इसको हम ऑपरेटर के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। दिस इज एल एक्स angular momentum operator equal to iota h cut bracket sin phi partial by partial theta plus cot theta cos phi partial over partial pi. So this is the angular momentum Lx operator in terms of what? Spherical polar coordinate. Similarly, Ly equal to this one and Lz equal to this one, and square of the total angular momentum L square, which is equal to Lx square plus Ly square plus Lz square equal to this one. तो हमें शो करना है कि हमारे पास जो एलेक्स ऑपरेटर है ये इसके बराबर है, तो इसको हमने प्रूव करना है कि एलेक्स ऑपरेटर इसके किस तरह बराबर है। सिमिलरली एल वाई, एल जी एंड एल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। द एंगुलर मोमेंटम is an important physical property of both classical and quantum mechanics. In present lecture, we discuss the angular momentum and its component in Cartesian as well as in spherical polar coordinates. In classical mechanics, the angular momentum of a particle is the cross product of radius vector and linear momentum. अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हो और उसके दरमियान क्रॉस हो, मीन्स उसमें वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है यहाँ पर एल को हम इस तरह मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट आई जे के, दिस इज एक्स वाई जी, दिस इज द कंपोनेंट of this r, and this is px py pg, the component of linear momentum, this one. Now lx equal to ypg माइनस जी पी वाई। हमें मालूम है कि L बराबर है हमारे पास L इक्वल टू एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जी के, और ऐसे हमारे पास आ जाएगा दिस इज वाई पी जी माइनस पी वाई इंटू जी आई। सो एल एक्स मीन्स, अगर इसको हम देखें एज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू दिस वन, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करें सो वी ऑब्टेन आई इंटू वाई पी जी माइनस जी पी वाई प्लस जे इंटू जी पी एक्स माइनस एक्स पी जी प्लस के इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब अगर इसको हम कंपेयर करें, दिस इज एल एक्स आई एंड दिस इज आल्सो आई, सो एल एक्स इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली दिस विल बी कंपेयर टू दिस वन, मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ जे बोथ साइड विल बी सेम, सो दिस इज आवर एल वाई एंड दिस इज आवर एल जी। इस तरह हमें मालूम है कि हमारे पास जो ऑपरेटर होता है पी ऑपरेटर, वो बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जी। पी वाई बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई। दिस इज पी एक्स माइनस आयोटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। तो अगर हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करें, सो वी ऑब्टेन एल एक्स इक्वल टू दिस वन, एल वाई इक्वल टू दिस वन एंड एल इज इक्वल टू दिस वन. In problems having spherical symmetry, it is useful to express these operators in spherical coordinate system, which are defined in the figure. The relationship between the Cartesian and the spherical polar coordinate is this one. इस फिगर को हम देखें, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्स है, ये हमारे पास z है। यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये है x y z, और इसके जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है ये वाली। This point P is r
डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर हम यहाँ पर एक राइट एंगल को बनाए, यहाँ पर एक लाइन को ड्रा करें, सो वी obtain a right angle triangle OZ and P. This is OZ and P, where OZ is parallel to along Z axis, and this is our OP, which is equal to R. तो अगर इस triangle को हम देखें, so this become R cos theta and this will be our R sin theta. Now this is our R sin theta. अगर इस R sin theta के हम प्रोजेक्शन ड्रा करें, इसका पैरेलल ये वाले वेक्टर ले लें, so this OQ equal to R sin theta, and this OW is our base, this is our right angle, and this is WQ is a perpendicular, means इस triangle OWQ को अगर हम इस तरह लिखें OWQ, but this OQ is what? This OQ is R sin theta, so this is our R sin theta, and this will become R sin theta sin pi, and this will be R sin theta cos pi. So the Cartesian coordinate x is equal to R sin theta cos pi in spherical polar coordinate system, y equal to R sin theta sin pi, and z equal to R cos theta. But we also know that R equal to vector R equal to xi plus yj plus zk, or the magnitude of this R is what? R square equal to x square plus y square plus z square. And similarly, in the triangle, this one, tangent phi equal to y over x. This is Q and W, this one, which is parallel to y. So this is our y, correct? And this OW is our x-axis. So in this figure, tangent phi equal to y over x. Tangent phi equal to, यहाँ इसको देखें तो आसानी होगी, क्योंकि डायग्राम जो है इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करें, so OWQ, या in this diagram, this is our y and this is our x, so tangent phi equal to y over x. Similarly, cos theta, and from this one, cos theta equal to z by r, and r equal to what? X square plus y square z square under the root. So cos theta equal to z divided by x square plus y square plus z square. So this is the relation between Cartesian coordinate system and spherical polar coordinate system. Now differentiate equation 4 with respect to x, y, z. This is our equation number 4. अगर इसको हम x के साथ differentiate करें, so we obtain this is 2r partial r by partial x equal to 2x. 2 cancel, and partial r by partial x equal to x divided by r. But x is what? X is r cos pi and sin theta divided by r. So partial r by partial x equal to this one. Similarly, अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, so we obtain this one. और अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, we obtain this one. Now differentiate equation number 3 with respect to x, y, z. This is our equation number 3, cos theta equal to z by r. अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें with respect to x, so this become minus sin theta partial theta by partial x, and this one is lower function derivative of upper function minus upper function derivative of lower function divided by r square. So this is minus sin theta partial theta by partial x. This becomes 0 because this z is constant for x axis, and minus z is r cos theta, and partial r by partial x is sin theta cos pi. From the इसको हमने previous slide में derive किया है. So by putting values, we obtain partial theta by partial x equal to this one. Similarly, if we differentiate this one with respect to y, we obtain this one, and if we differentiate this one with respect to z, we obtain this one. Now differentiate equation number 5. This is equation 5 with respect to x axis, so this becomes secant square pi partial pi by partial x, and using here the quotient rule or division rules, so this equal to, by simplify this is 0 minus r sin theta sin pi divided by r square cos square pi sin square theta. By simplify this, we obtain partial pi over partial x equal to minus sin pi divided by r sin theta, this one. इस तरह अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, so we obtain this one. अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z, we obtain this one.
Now we know that x is a function of r, theta and phi. So partial over partial x को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, partial r by partial x dot partial by partial x, partial theta by partial x dot partial by partial x plus partial pi by partial x dot partial by partial x, are simple using here the chain rules. So partial by partial x इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव की है, तो हमारे पास इसके बराबर है. सिमिलरली इसकी वैल्यू हमने डिराइव की है, तो हमारे पास इसके बराबर है, और इसकी वैल्यू हमने डिराइव की है, तो हमारे पास इसके बराबर है. सो पुटिंग द वैल्यूज वी ऑब्टेन पार्शियल और पार्शियल x इक्वल टू दिस वन. सिमिलरली पार्शियल और पार्शियल z इक्वल टू दिस वन. अब यहाँ पर जो है पार्शियल और पार्शियल z की वैल्यू हमने डिराइव की है, इसकी वैल्यू भी हमने डिराइव की है, और इसकी वैल्यू भी हमने डिराइव की है. तो सिंपल इसकी वैल्यू पुट करें, एंड बाय सिंप्लीफाई वी ऑब्टेन partial or partial z equal to cos theta partial over partial r minus sin theta by r into partial by partial theta. Now, as we know that the operator corresponding to these variables are what? Lx equal to minus iota h cut y into partial by partial z minus z into partial by partial y. तो यहाँ पर y की वैल्यू हमने पुट की, और partial by partial z की वैल्यू ये वाली हमने पुट कर दी. सिमिलरली माइनस जी की वैल्यू हमने पुट कर दी, और पार्शियल और पार्शियल की वाई हमने ई वाली वैल्यू पुट कर दी. इफ वी मल्टीप्लाई दीज वी ऑब्टेन आर साइन थीटा साइन पाई कास थीटा पार्शियल बाई पार्शियल आर माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन पाई पार्शियल और पार्शियल थीटा माइनस आर कास थीटा साइन पाई पार्शियल बाई पार्शियल आर माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन पाई पार्शियल और पार्शियल थीटा प्लस कास थीटा कास पाई डिवाइड बाई साइन थीटा इनटू पार्शियल और पार्शियल पाई. तो ये दोनों टर्म जो है ये एक जैसे है, कैंसिल हो जाएंगे, और इस टर्म से हम माइनस साइन पाई पार्शियल और पार्शियल थीटा को कॉमन करेंगे. सो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू माइनस साइन पाई पार्शियल बाई पार्शियल थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस पाई इनटू पार्शियल और पार्शियल पाई. सो दिस इज a well-known trigonometric identity which equal to 1. So Lx become equal to this one. Iota h cut sin pi partial by partial theta plus cot theta cos pi partial over partial pi. This is angular momentum Lx in spherical polar coordinate system. Similarly, Ly equal to minus iota h cut z into partial by partial x minus x partial by partial z. तो यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करें, z equal to r cos theta partial over partial x equal to this one and partial over partial z equal to this one. तो यहाँ वैल्यू पुट करें, so we obtain this expression. Correct? Now by simplify this, multiply this to this, and this, and similarly this to this, and this. By simplify we obtain this one. This is Ly minus iota h cut into cos pi partial by partial theta minus cot theta sin pi partial over partial pi. This is angular momentum operator Ly in spherical polar coordinate system. And the last one is Lz, which is equal to minus iota h cut x into partial or partial y minus y partial by partial x. अगर x की और इसकी वैल्यू हम पुट करें, so we obtain this one. Now multiply this with this and this, and this to this and this, and simplify this one. We obtain Lz equal to minus iota h cut cos square pi plus sin square pi into partial over partial pi, or simple Lz equal to minus iota h cut partial over partial pi. This is the angular momentum operator Lz in a spherical polar coordinate system. Now our next task is to find out the L operator square equal to this one. अब हमने इसको शो करना है, सो आइए देखते हैं. अब हमें शो करना है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर होता है वो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसके बराबर होता है. इसको हमने प्रूव करना है. सो एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर इक्वल टू Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ हम Lx स्क्वायर Ly स्क्वायर और Lz स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे. So we obtain this one. So as Lx operator square equal to Lx operator into Lx operator. So as
Lx square operator equal to the product of Lx operator and Lx operator. Now we already know that Lx operator equal to this one. Iota h cut bracket sine pi partial by partial theta plus cotangent theta cos pi partial by partial pi multiplied by again iota h cut the value of Lx. अब याद रखिए this iota h cut and this iota h cut become minus h cut square, लेकिन इस sin pi and this is partial by partial theta इसको हम ऑपरेट करेंगे इस पर, फिर इसी पार्शियल बाय पार्शियल थीटा को हम ऑपरेट करेंगे इस पर, और इसी तरह प्लस cot थीटा cos पाई partial over partial pi, this partial over partial pi operate on this function as well as this partial over partial pi operate on this function. So we obtain sin pi as it is partial by partial theta operate on this function, sin pi partial by partial theta plus sin pi partial by partial theta operate on this function, cot theta cos pi partial over partial pi. Now this will be operate and this one on this one, so plus cot theta cos pi partial over partial pi sin pi partial by partial theta plus cot theta cos pi partial over partial pi cot theta cos pi partial over partial pi. Now for this partial over partial theta sin pi is a constant, so this multiplied to this one we obtain sin square partial theta square, और इस partial by partial theta का हम differentiate करेंगे with partial by partial theta. Similarly in this case cos pi and partial over partial pi is a constant, तो इसको हम आगे ले जाएंगे यहाँ पर, और partial over partial theta cot हम differentiate करेंगे with respect to theta, so this become minus cosecant square theta. Clear? Now in this case cot theta cos pi partial over partial pi sin pi partial over partial theta, so again partial over partial theta is constant पर partial over partial pi, और इस sin pi का हम differentiate करेंगे with respect to pi, so we obtain cos pi, so cos pi into cos pi this one, so this term become this one. Similarly in this case partial over partial pi पर this cot theta is constant, तो ये आगे आ जाएगा, तो this multiply to this one we obtain cot square theta cos pi as it is, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक cos pi है और दूसरा है partial over partial pi, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन cos pi डिफरेंशिएट दिस वन del square by del pi square minus second function this one and differentiate of cos pi minus sin pi. So by rearranging this whole term we obtain this one. This is the value of Lx square operator. Similarly Ly operator square equal to what? Ly into Ly, तो यहाँ पर हम Ly की वैल्यू को पुट करेंगे, this is the value of Ly, this one, and again Ly की वैल्यू को हम पुट करेंगे this one, this is the value of Ly. Now cos pi into this, sorry, minus iota h cut into minus iota h cut, so this become minus h cut square, and cos pi as it is, and this partial by partial theta operate on this cos pi partial over partial theta, correct? And this cos pi and this partial over partial theta again operate on this one. Similarly this term will be operate on this one and this one, so we obtain minus h cut square cos pi partial by partial theta cos pi partial by partial theta plus cos pi partial by partial theta into minus cot theta sin pi partial over partial pi minus cot theta sin pi partial over partial pi into cos pi partial by partial theta plus cot theta sin pi partial over partial pi cot theta sin pi partial over partial pi. अगर इसको हम again differentiate करें, so we obtain cos pi partial by partial theta, and this cos pi is constant पर this theta, so ये आगे आ जाएगा और cos pi के साथ multiply हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और इस partial by partial theta का हम differentiate करेंगे with partial by partial theta, so this term become this one. Similarly in this case sin pi and partial over partial pi are constant, so ये आगे आ जाएगा, और partial over partial theta ये हम ऑपरेट करेंगे only minus cot theta पर, so we obtain
cot थीटा का हमारे पास डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. सो फ्रॉम दिस टर्म वी ऑब्टेन दिस वन. सिमिलरली इस टर्म को देखें, सो इस टर्म में पार्शियल बाई पार्शियल थीटा जो है ये कांस्टेंट है, पर पार्शियल पाई और पार्शियल पाई, सो आगे जाएगा. और इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल और पार्शियल पाई कास पाई, सो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई. सो दिस टर्म कन्वर्ट टू दिस वन. सिमिलरली इन दिस केस cot थीटा इज कांस्टेंट, सो ये आगे जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा साइन पाई एज इट इज. और यहाँ पर अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, साइन पाई एंड पार्शियल और पार्शियल पाई, तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें. So this expression convert to this one. Again by rearranging this whole term we obtain this one. This is the value of Ly operator square. Now the last one is Lz operator square, which is equal to Lz into Lz. So Lz operator is what? Minus iota h cut partial over partial pi, and Lz is minus iota h cut partial over partial y. So this become this one. Now putting equation number 2, 4 and 3 in equation number 1 we obtain. As equation number 1, L square ऑपरेटर इक्वल टू Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर. तो यहाँ पर Lx की वैल्यू को पुट करें, ये सारा जो है हमारे पास Lx की वैल्यू है. फिर Ly की वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास जो है Ly की वैल्यू है. और लास्ट में Lz की वैल्यू को पुट करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. सो ये हमारे पास Lz स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू है. नाउ अगर हम इस टर्म को देखें तो इसमें हमारे पास जो ये वाला टर्म है जिसको मैंने नाम दिया है 1, और ये वाला जो है 1, ये एक जैसे है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली ये 2 वाला टर्म और ये 2 वाला टर्म, ये वाला और ये वाले सेम है, मींस पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. सो बाय रीअरेंजिंग दिस होल एक्सप्रेशन वी ऑब्टेन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल थीटा स्क्वायर या पार्शियल स्क्वायर थीटा सॉरी, प्लस cos स्क्वायर पाई पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा cos स्क्वायर पाई पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा प्लस cot थीटा साइन स्क्वायर पाई पार्शियल बाय पार्शियल थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर पाई पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल पाई स्क्वायर प्लस cot थीटा साइन स्क्वायर पाई पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल पाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल पाई स्क्वायर. अब इसमें देखिए हमारे पास साइन पार्शियल स्क्वायर पार्शियल थीटा स्क्वायर कॉमन है, इसको हम कॉमन करेंगे. सो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सो दिस होल टर्म कन्वर्ट टू व्हाट, दिस वन. सिमिलरली यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है cot थीटा इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को हम कॉमन करेंगे. सो वी ऑब्टेन cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई. सो दिस होल टर्म आल्सो कन्वर्ट टू दिस वन. सिमिलरली इन दिस एक्सप्रेशन में अगर हम cot स्क्वायर थीटा इनटू पार्शियल स्क्वायर पार्शियल पाई स्क्वायर को कॉमन करें, सो दिस टर्म विल बी कन्वर्ट टू दिस वन एंड दिस टर्म विल बी एज इट इज. नाउ L operator square equal to minus h cut square partial theta square plus cos theta by sin theta into partial by partial theta plus यहाँ पर हमारे पास पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल पाई स्क्वायर कॉमन है. सो दिस बिकम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड L operator square equal to minus h cut square partial theta square plus cos theta by sin theta partial by partial theta, and this become cosecant square theta, and cosecant square is what, 1 over sin square theta partial square partial pi square. So this is the value of angular momentum operator L square. Now this expression can be written as this one. L operator square equal to minus h cut square into 1 over sin theta partial by partial theta into sin theta partial by partial theta plus 1 by sin square theta partial square by partial pi square. Means these two terms, इस दोनों टर्म को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया. इस दोनों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इसको हम प्रूव करें, सो 1 over sin theta partial by partial theta sin theta into partial by partial theta. So 1 over sin theta, इस पर जो है हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड
this sine theta cancel, and cos over sine partial by partial theta. So it means this expression can be written as, so this is the angular momentum operator square expression, and this will be used in quantum mechanics and especially in hydrogen atom. Thank you.